Hello students, welcome to BDS Canal classes. Myself Sanjay Verma. Dear students, today in this video I am going to teach you about windstorm and cyclones. Okay, wind, storm and cyclones. Okay, this is your ninth chapter. Okay, chapter 9th. So what is wind? Wind क्या है? Have an idea what is wind? Dear students, as you know that a wind is a group of different gases and dust particle also. हवा क्या होता है? बहुत सारे गैसों और धूल कणों का क्या होता है? समूह होता है. that occupy space, that have some mass. So overall you can that wind over air is a matter because it is consisted by different gases. हवा क्या होता है? बहुत सारे गैसों से मिलकर बना होता है. ओके, wind is also called as breeze. जिसे क्या कहते हैं बेटा? ब्रीज कहते हैं. It is also called as breeze. Okay, means the air which have the air that blow with very slow speed called as wind. वह हवाएं जो बहुत कम स्पीड से ब्लो करती हैं, बहती हैं, ब्रीज कहलाती हैं, विंड कहलाते हैं. ओके, these are the natural things, and you know that breeze is not injurious or dangerous for plant and animals. They do not uproot the trees or plants. Overall you can say that winds are useful for living beings and there is no damage done by blowing of wind. हवाओं के बहने से कोई डैमेज डन नहीं होता है, कोई खतरा नहीं, कोई नुकसान नहीं होता है. इससे सिर्फ और सिर्फ हमको लाभ ही होता है. ओके, एंड विंड इज वेरी यूजफुल फॉर द हेल्थ इफ इट इज फ्रेश. ओके, सो इफ द स्पीड ऑफ एयर इज 5 to 20 किलोमीटर पर आवर, then it is called as wind. यानी कि स्पीड 5 से 20 किलोमीटर के बीच में है, 5 to 20 किलोमीटर है, दिस इज कॉल्ड एज ब्रीज. ओके, नेक्स्ट इज स्टॉर्म, तूफान. स्टॉर्म्स तूफान. ओके, तूफान. When air blow with high speed, that is from 30 to 60 or 70 km per hour, that air is called as storm. If air blows 30 to 60 km per hour, then these are called as storms. यदि हवाएं 30 से 60 किलोमीटर के बीच में बहती हैं तो उन्हें हम तूफान कहते हैं. एंड दे कम्स डैमेज डन, मीन्स storms are dangerous for plant and animals. There are number of plants uprooted. Number of plants uprooted. बहुत सारे पेड़ क्या होते हैं? उखड़ जाते हैं. ओके, बहुत सारे पेड़ उखड़ जाते हैं. दे डिस्ट्रॉय दी सेजेस, क्रॉप्स and
houses whose are constructed by leaf of the sugarcane and bamboos। ये क्या करते हैं? पेड़ों को उखाड़ देते हैं, झोपड़पट्टियों को गिरा देते हैं, फसलों को नष्ट कर देते हैं। ओके, सो ओवरऑल यू कंसीडर दैट दीज आर डेंजरस फॉर द प्लांट एनिमल एंड हाउसेज आल्सो। ओके, नेक्स्ट आर साइक्लोन, चक्रवात। साइक्लोन, चक्रवात। Dear students, a cyclone is a large scale air mass that rotate around a strong center of low atmospheric pressure। ये क्या होता है? हवाओं का एक बहुत बड़ा जत्था। जब हवाओं का बहुत बड़ा जत्था क्या हो, रोटेट करे अराउंड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, एक स्ट्रॉन्ग सेंटर के बीच में जहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो, लो हो, उसे हम क्या कहते हैं? साइक्लोन्स कहते हैं। ओके, साइक्लोन्स आर टू टाइप। साइक्लोन्स आर टू टाइप। कितने टाइप होते हैं? टू टाइप होते हैं। नंबर वन, मिड लैटिट्यूड साइक्लोन, मिड लैटिट्यूड साइक्लोन। नंबर वन, मिड लैटिट्यूड साइक्लोन। नंबर सेकंड इज ट्रॉपिक लैटिट्यूड, ट्रॉपिक लैटिट्यूड साइक्लोन। ओके, नंबर वन मिड लैटिट्यूड साइक्लोन एंड नंबर टू ट्रॉपिक लैटिट्यूड साइक्लोन्स। ओके, द मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स आर causes water flow near the bank of seas or rivers। इनके कारण क्या होता है? समुद्रों में तूफान आता है और समुद्र का पानी क्या होता है? स्थल भाग घुस जाता है, स्थल भाग में घुस जाता है। ओके, एग्जाम्पल्स आर टाइफून, टाइफून। टाइफून क्या है? मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स हैं। ओके, इट इज आल्सो कॉल्ड हरिकेन्स, हरिकेन। ओके, द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड साइक्लोन्स आर टाइफून, हरिकेन्स एंड you know that the name of the cyclones is different in different areas. Okay, hurricane, the name hurricane is called in अमेरिका। अमेरिका में साइक्लोन्स को हरिकेन कहा जाता है। जापान में टाइफून कहा जाता है। मीन्स साइक्लोन का नाम डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट होता है। इन इंडिया इट इज कॉल्ड एज साइक्लोन्स, इंडिया में साइक्लोन कहा जाता है। अमेरिका में हरिकेन कहा जाता है, जापान में टाइफून कहा जाता है। सो साइक्लोन्स आर वेरी डेंजरस एंड इन साइक्लोन्स द एयर ब्लोज विथ 90 to 120 or 160 km/h। It is common in seas and the water of seas is come in the land part and damage done. Okay, so I hope that all of you understood about wind, storm and cyclone. All of you see this video carefully and note down the important topics related to this video.
थैंक यू, हैव नाइस डे।